Morning, dear students. Today we are going to discuss biochemistry. It is a subject in your second year, biochemistry and clinical pathology. बायोकेमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम मार्च मंथ में हो सकते हैं, तो आप अभी से तैयारी कीजिए। डेली आप आपके सिक्स सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है और इनके आपको नोट्स भी बनाने हैं, जिससे एग्जाम टाइम पे आपके पास मटेरियल होगा तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एग्जांपल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट and what is osage formation, biological importance and role of carbohydrate in the human body, and what is muta rotation, and what is Benedict test, and give the test for non-reducing sugar identification टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। तो बायोकेमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम ये समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। बायो मीन्स होता है लिविंग, और केमिस्ट्री में हम हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे हार्मोन हैं, एंजाइम्स हैं, और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और डीएनए, आरएनए, ये सब की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और ये सेल सब बायोमोलिक्यूल से बने हुए हैं। हार्मोन और एंजाइम भी हमें पढ़ने हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम जो न्यूट्रिशंस लेते हैं इससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो ये न्यूट्रिशंस में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैवी होता है, जैसे कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, और ये एक लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कम होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनकी जरूरत पड़ती है। विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस को ऑपरेट कर सके। हमें प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्यों हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेल और इसके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, और कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली थ्री क्लास में डिवाइड किया गया है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। functions of biomolecule, therapeutic importance of enzymes, एंजाइम्स की थ्योरी, कैसे एंजाइम काम करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और लिपिड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। लिपिड के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम आती है। प्रोटीन के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है गाउट, जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन हमारे जॉइंट पे होता है, इस वजह से इंटेंस पेन का सेंसेशन आता है। और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज, शुगर, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। बायो केमिकल मॉलिक्यूल हमें इसमें पढ़ने हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, सेरोटोनिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। ब्लड टेस्ट क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स। प्रोटीन का जो स्मॉल यूनिट होता है, जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स में टूटता है। अमाइनो एसिड्स मोनोमर है और ये आपस में कनेक्ट करके प्रोटीन के हैवी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, क्वांटिटेटिव टेस्ट जो प्रोटीन के लिए लगाए जाते हैं, प्रोटीन का बॉडी में बायोलॉजिकल रोल क्या है, और इसमें लिपिड्स लिपिड्स की क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स और डेफिनेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स, टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स एक्चुअली जब लिपिड प्रोटीन के साथ कंजुगेशन करता है तो उससे लिपिड
और प्रोटीन को साथ में लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो लिपोप्रोटीन के ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शंस हैं और लिपिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या इसके टेस्ट हैं, ये सब हमें पढ़ना है। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी, एंजाइम्स की डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम्स के इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ना है। और थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, विटामिन्स की डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी। विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल है के, ई, डी, ए। इसके अलावा जितने भी विटामिन्स हैं ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज हमें पता होना चाहिए, और विटामिन के सोर्सेज इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, जैसे रिकेट्स होता है, क्वाशीयोरकर होता है। कैल्शियम की कमी से बोन्स कमजोर होते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा प्रॉब्लम आता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से ज़ीरोफ्थैल्मिया, जो कि आई से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, ये फेस करनी पड़ती है। इसमें फिर हम लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि इनका बॉडी में क्या रोल होता है, एरिथ्रोसाइट्स का। और रिपोर्ट्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सीबीसी, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, ये सारी रिपोर्ट्स हम समझते हैं कि कैसे इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिफाइन एंड क्लासिफाई प्रोटीन, राइट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, डिस्कस अबाउट द qualitative test for carbohydrate, disease related to the metabolism of carbohydrate, and classify and define lipid, discuss the disease related to the lipid metabolism, write the qualitative test of lipid, and or what are vitamins, and describe the water soluble vitamins, important role in the maintenance of health, and discuss the importance of minerals, and what is enzyme in the classification of pharmaceutical importance, mention the normal and abnormal constants of urines, and its significance. What is erythrocytes and its significance in human body? Write a short note on the following. Amino acids की definition, monosaccharides क्या है? What is ATP? Adenosine triphosphate. It's an energy molecule of the body, and energy production basically happens inside the cell by phosphorylation in the mitochondria. It is the site of energy production in the cell. Biochemistry की definition, protein deficiency ratio, diabetes mellitus, ketoacidosis, obesity, and what is coenzyme, importance of water in the human body, and roles of enzymes, and what is erythrocytes, what is edema. Edema is a swelling, it can be a localized part of the body, and it can affect the whole body. In case of low clearance of the kidney and dysfunction of the kidney, edema is caused. And there are some definitions which are obviously very important for exam point of view, like what is cell, what is biomolecule, draw the label diagram of cell, describe the various part of cell, what is nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, lysozymes, and ribosomes, Golgi apparatus, and plasma membrane. And there are three types of question which can be asked by the university: long type, short type, and medium type of questions. And you you are asked 8 questions in the university exam, and in which out of 5 is mandatory to solve. And further, we move on to the questions. Define and classify minerals with suitable example. Give the biological role and deficiency disorder of the following minerals, like calcium, iron, iodine, copper, phosphorus, sodium, potassium, and chlorine. And these are the minerals. You must know their importance in the body. For example, calcium is responsible for muscles contraction. And we move to the next question. Uh, Explain the term anemia and dehydration, and what are the symptoms of anemia,
And what are the different types of anemia? Megaloblastic anemia, pernicious anemia, iron deficiency anemia, what is leukemia? So you must know about this. And examples of biological importance of amino acids. Describe the structure of protein. Describe protein deficiency diseases like kwashiorkor and marasmus. And biological functions and physiological role of lipid in the human body. What is difference between glucose and starch? And what is biochemistry of metabolism? What is metabolism? You also uh, y- know about this metabolism process. What do you mean by optical isomerism? What do you mean by isoelectric pH? Uh, Explain about it. Explain about DNA, RNA, and write down the function of DNA, examples of enzyme, describe allosteric enzyme, re-regulation, write a short note on enzyme inhibition, and explain the road option cycle, and explain the function of vitamin C and the function of vitamin E, and biological significance of cholesterol. Describe the glycolysis cycle with their energetic. What is urea cycle? What is function of iron and phosphorus? Describe different types of anemia. What is ORS therapy and kidney function test? Describe the urine function test. Write down the function of liver. What is composition of blood? Explain the disorder of platelets and WBCS. Describe uh, disorders of calcium deficiency. Give the introduction of biochemistry. So these all are important questions you must keep in your mind while studying this subject. It is an important subject. You must keep focus on it because many students get back and get failed in this exam of biochemistry. So keep in your mind important subject. Now, today we will start with the carbohydrate. Carbohydrate is the energy molecule of human body. Carbohydrates are most abundant organic molecule in the nature. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde. On hydrolysis, carbohydrate gives ketone group, hydrogen, oxygen, and some other groups. They are participating in the cellular function and serve as a storage form of energy. Majority of sugars in the human body is D type. Human can metabolize only D type of sugar, and the empirical formula of carbohydrate is CnH2O whole bracket kostak N. The simple formula is C6H12O6. It is for glucose and aldose type and ketose type of sugar. Aldose are monosaccharides, it containing the aldehyde groups, for example, glyceraldehyde, and ketones are monosaccharides containing ketone group like dehydroxy, dehydroxyacetone. So classification of carbohydrate is monosaccharides. It is further classified into triose, tetrose, pentose, hexose, and heptose. The example of triose is glyceraldehyde, and ketone example is dihydroxyacetone. And tetrose example is erythrose, pentose is ribose and xylose. Hexose example is glucose, and heptose example is glucohaptose. So this is examples. The examples of disaccharides is sucrose, lactose, and maltose. And trisaccharides example is raffinose and glutinose. Examples of polysaccharides is starch, dextrine, and glycogen and cellulose. Uh, Glycogen found in the animals and cellulose found in plant. So this is classification of carbohydrate, and it is important for exam point of
view. This question is also important. It may be asked in exam. Reducing sugar and non-reducing sugar. Carbohydrate with free aldehyde or free ketone is called reducing sugar, and free functional group are not available in non-reducing sugar. So this is the basic difference. Now we move to the chemical identification of carbohydrate. There are few tests which chemically identify the carbohydrate in the given sample. Molis test. The reagent we use in this test is naphthol and 95% of alcohol and concentrated H2SO4 hydrochloric acid. Its principle is based on the dehydration reaction. Its procedure is we prepare 2 ml of test solution and add 2 drops of Molis reagent, pour 5 ml concentrated hydrochloric acid or H2SO4 sulfuric acid, and observe the color change. If the ring of purple color is observed, it shows the presence of carbohydrate. Otherwise, no color or no formation of ring shows negative results, absent of carbohydrate. Now, Benedict test. The reagent used in this test is copper sulfate and sodium citrate, sodium carbonate, or principle is based on the reduction reaction. Procedure is we take 1 ml of test solution in the test tube and add 2 ml of Benedict reagent. Heat the solution in the water bath and observe the color change. If red colors appear, it shows the presence of carbohydrate. Now we move to the next test, Fouling test. The reagents used are Fouling A and Fouling B solution. And the principle of this test is based on reduction reaction. And the procedure, we take 2 ml of test solution and add Fouling reagent A and Fouling reagent B in the equal ratio and heat the solution in the water bath and observe the color change. If red color appears, it shows the presence of carbohydrate. So we have gone through with the three tests till now, Mollis test and Benedict test and Fouling test. Now this is bile test. The reagent used is called Biles reagent, and principle it is based on dehydration reaction. Procedure, we take 2 ml of test solution and add bile reagent 5 ml and heat the solution on the water bath and observe the color change. If green colors appear, it shows the presence of carbohydrate. Now, we see few biomolecules which are important for human body and for survival of humans. These are organic molecules. The major component of human body is made up of protein, carbohydrate, and lipids. And it contains the molecules or atom like carbon and nitrogen, sulfur, hydrogen. These are present in the major amount. And the carbohydrate is an energy molecule, and protein is for building up blocks of the body, and it is responsible for healing in case of injury in the human body. Now, very few elements needed, 97.5 living matter composed of only four elements, carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. 98% living matter, two elements added, phosphorus and sulfur. And vertebrate organism also contain 2% of calcium is also important. And now, b- building organic molecules. Single building blocks is called monomer, and if join two monomers, it's called dimer, and join three monomers, it's called trimer, and join many monomers is called polymer. The monomer of protein is amino group, amino acids, and the monomer of carbohydrate is simple sugar, glucose, and lipid is a long chain compound like example oils,
Now, protein, our muscles and hairs are made up of protein, different type of proteins. Our nails and hairs is a keratinized hard type of protein. It is indigestible in nature. Protein is a complex molecule, and there is a one more uh, example is hemoglobin. He means iron and globulin is a protein. So hemoglobin is a metalloprotein. Iron metal is present, element is present in this. And now carbohydrates, example is glucose and polysaccharides are found in plants and animals. Cellulose found in plants, as I told you before, and starch is also present in plant, and glycogen is present in the animal. It is a storage form of carbohydrates, and it provide energy. Lipid is made up of glycerol and acid. It has two types, saturated, no bond is present, and unsaturated, contains at least one double bond. And it includes fats, wax, and oil, phospholipids, and it provides energy, insulation, and the cell membrane is plasma membrane is made up of phospholipid. Now we move to the minerals, calcium, potassium, sodium, magnesium, chlorine, iodine. These are the minerals, and vitamins are vitamin A, K, E, D, and family of vitamin D. So this is vitamin. Now it's enough for today. We will continue this in the next lecture. Thanks for listening. Have a nice day.